Ji, Assalamu alaikum. When are we expected to start? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ji, Sir, we are starting now. Assalamu alaikum, everyone. I hope you all are doing well and having happy and healthy rainy days with the slaughtering animals as Bakrid is just around the corner. So this is Ms. Karba, and I'm here today on behalf of Valeem to host this session. Today's session is about the youth and entrepreneurship, as you all know. Before digging deep into our session, let's head towards what Valeem is all about. So Valeem is an online platform for smart learners and tutors, which was founded आपकी by आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, बिल्कुल आवाज क्लियर नहीं आ रही है. Can you hear me now? No, your voice is pretty clear. I think जिन्होंने notify कराया उनका internet problem होगा, because your voice is pretty much clear. Okay. It can be because of the rainy weather right now at the moment. So the connections are getting dropped. No problem. Let me move ahead. So Valeem was actually founded by the two IBA grads, by Sir Ali Rehan and by Sir Ghayasuddin. So Valeem basically offers quality education through live and interactive online classes for one-on-one and group tuition for multiple programs. Let me share a few details about Valeem that makes them proud. It's that the students are based in around 13 plus countries of the world. And this is mainly one of the reasons that we have a very good number of students. As far as the retention ratio is confirmed, is around 90%, which means that when students join us, they stay with us for longer. If we talk about the parent satisfaction ratio, Valeem actually tries to make sure the quality assurance, and this is the reason that people we have on board with us, they are quite satisfied. I mentioned that we have already an outstanding number of students, but they are currently enrolled, and most of them are in O and A levels. Now, as far as the other categories are concerned, we offer languages as well, where comes German, Chinese, French, Spanish. And we have also recently launched a few months back self-care courses, keeping in mind the basic human need. We also offer CSS preparation and skills development courses like Microsoft Office, graphic designing, makeup classes, advanced hairstyling, and so on. So basically, Valeem is actually all about encouraging the youngsters and the individuals to come forward and explore their talent, which is unique among all. And this is what our today's session is all about, the youth and the entrepreneurship. So in these changing dynamics and the current world, we see that it is becoming much more common for teenagers to start exploring the career opportunities early in their lives. Be it hundreds, thousands of freelance opportunities, acquiring a productive skill, being part of the corporate sector remotely, or starting up their own business. Now, the teenagers are starting it much more earlier in their lives. With the transition of dynamics in the global economy, the global market is becoming harshly competitive. And I'm damn sure that you all are well aware of the conditions of the job market too.
So with these growing problems of the world, entrepreneurship is becoming essential to solve the new challenges that are being faced. And for that, today we have a very knowledgeable, esteemed, kind panel of guests who work with the youth every day. They are extremely accomplished individuals who have made out the career from scratch and aspire to be the role models for the youth today. So let's have a brief introduction to all of them. We have Sir Abid Ali Umang with us, who is one of the outstanding teachers of Urdu and the co-founder of Pakistan Debate Council, also served as the parliament as member National Assembly, and represented Pakistan in United Nations as well. Our next speaker is Ms. Saman Ali, who holds a master's degree and has experience of, mashallah, 13 years in teaching O-level chemistry at the city school. She has been conducting multiple professional development sessions as well, and she has also reviewed the current CAI endorsed chemistry book. And currently she is working as the academic coordinator at Alpha Girls School. Our next speaker is Ms. Misbah Amin, and she is the Senior Executive Women Entrepreneurship at IBA and the co-founder, the founder of E-Ingenious as well. Recently, she has arranged the Kids and Teen Summer Camp at IBA. I was a part of that too, and they did it very well. We have Sir Zahid Anwar with us as well, who is renowned for particularly English language, and his teaching experience is about 15 years, and he has taught around 8,000 students. So he is actually a perfect choice if anybody is looking forward to improve their language skills. Now, our fifth speaker panelist is Sir Hamza Abdul Rauf, who is a passionate entrepreneur with a bachelor's degree. And I'm sure you all know about Telemart. He is the co-founder of Telemart as well. And his age at the time was actually 20. So before further delay, let's go forward towards our discussion. So my very first question is that, who is an entrepreneur to you, and can you talk about some essential characteristics that an entrepreneur possesses? So do we have right now Sir Hamza Abdul Rauf with us? जी बिल्कुल, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? Yes sir, you are clear. Perfect. Bismillahirrahmanirrahim. सबसे पहले thank you for inviting me on this panel, and I'm बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ कि मेरे साथ इतने distinguished panelists इस panel पे मौजूद हैं. अच्छा, जो सवाल है कि entrepreneur जो है उसके क्या characteristics हैं, देखें entrepreneur जो है वो कोई बहुत ज़्यादा unique या बहुत novel creature नहीं है, या बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए कोई इंसान नहीं बन सकता या कोई बहुत मुश्किल characteristics हो. इसके लिए बेसिक्स पर जो क्या है, बेसिक्स ये है कि आपके लिए आपके दिमाग में बड़ी सोच होनी चाहिए, आपके दिमाग में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट दुनिया में लाने का जो है वो एक इनिशिएटिव होना चाहिए जो आपको बाकी लोगों से मुख्तलिफ करता है कि आप यू वांट टू मेक एन इम्पैक्ट. अब इसके अंदर अगर आप एक एग्जांपल लें, पहला कैरेक्टरिस्टिक जिसको कहें तो वो रिस्क टेकर होना चाहिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इटसेल्फ एक बहुत बड़ा रिस्क है कि आप 9 to 5 जॉब को छोड़कर, जहां पे आपको एक फिक्स सैलरी मिल रही है, हर महीने सैलरी मिल रही है, आप एक कंफर्ट जोन के अंदर उसको छोड़ के आप अपना कारोबार स्क्रैच से स्टार्ट करें, और उसमें लॉस भी होगा, उसमें कभी नफा भी होगा, उसमें चैलेंजेस भी होंगे. तो रिस्क टेकर होना बहुत ज्यादा जरूरी है उस इंसान को जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाता है और उसको प्रेशर हैंडलिंग आती हो. दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए इंसान को, जिसको हम एक और ये भी कहते हैं कि बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने पिवट बहुत सारे लिए अपने कंपनी को लेकर, अपने बिजनेस मॉडल को लेकर, और चीजों को हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से पिवट किया बहुत तेजी के साथ. तो पिवट करना भी उसमें आता है, उसमें मल्टीपल वर्टिकल्स को स्टैब्लिश करना भी आता है, उसमें नए बिजनेस डोमेन्स के अंदर जाना भी जो है वो एक्सपेरिमेंटल के डोमेन के अंदर आता है. तो अगर आप एक्सपेरिमेंटल होंगे तो ही आप ये सारे काम जो है वो
कर सकेंगे। और इसकी हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल जो है, बहुत क्लीशेड एग्जांपल है, लेकिन वो इलॉन मस्क ही एक आप कह सकते हैं, क्योंकि इलॉन मस्क ने पेपैल को जो है वो को फाउंड किया था, जो कि एक बहुत बड़ा ग्लोबल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। और बड़ी अर्ली एज के अंदर वो पेपैल जब उन्होंने सेल किया तो वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का सेल हुआ। तो कोई और आपकी और मेरी जगह होता तो उस पैसे से खुश होकर कुछ और कर लेता, लेकिन उन्होंने फिर एक और कंपनी बनाई, उसके बाद एक और कंपनी बनाई, फिर टेस्ला में गए, टेस्ला के बाद स्पेस एक्स में गए, स्पेस एक्स के बाद अब वो न्यूरो साइंस के अंदर है, न्यूरो साइंस के बाद अब वो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, अब वो मून के ऊपर लोगों को लेकर जा रहे हैं। So an entrepreneur is in the constant urge of doing something extra to create a positive impact on the society at large. तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रिस्क टेकर होना, बड़ा एम्बिशन होना, बड़ी सोच होना, एक्सपेरिमेंटल होना और ओपन टू चेंज होना। और आखिरी ऑब्वियसली जो एक ड्राइविंग फोर्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, कि वो जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं, उसको लेकर वो पैशनेट हो। क्योंकि अगर वो पैशनेट नहीं होंगे तो बाकी सारी चीजें जो है वो सेकेंडरी हो जाती हैं। पैशन होगा तो बाकी तमाम तर चीजें, एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस। सो दैट्स माय टेक ऑन व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स एन एंटरप्रेन्योर मस्ट possess. Thank you. Exactly, yes, I agree to you. And as you have started your venture at the age of 20, so I'm sure that you have explained it quite nicely. So my next question is to Sir Zahid Anwar. Sir, are you there? Ji, I am here. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Sir, so how do you think that as like you are teaching from, you have taught thousands of students and they were around 8,000 as I have just said. So what do you think that whether our youth possesses the skill set or is working to acquire the skill set that an entrepreneur you think must have? Sir, can you hear me? Is it me? Is everyone else having a little bit of problem in the question? Because I could not get the question, unfortunately. Uh, shall I repeat the If you could question? repeat it. Yeah, please. Now I have a Yeah. better connection now. All right. Sir, the question is on the screen as well, and I'm repeating it too. That what do you think that our youth possesses the skill set or is working to acquire the skill set that an entrepreneur must have? Yeah, thank you. Assalamu alaikum, everyone. My name is Zahid Anwar. I'm an English language teacher by profession. It's a really great honor for me to have rubbing shoulders with such elite panelists over here. My heartiest greetings to the panelists over here as well. I am dealing with students of the age of 14 and 15, 16 to an extent, and then the relationship continues, and I have the relationship with them for a very long time. What I have seen is that the world is changing. People like Hamza Sahab over here right now, people like him have encouraged from our local market they have encouraged our students to think out of the box. पहले तो ये बात समझने की कोशिश करें कि एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में फर्क क्या है। क्या आपको बिजनेसमैन बनना है या एंटरप्रेन्योर बनना है? Do you want to continue with the same skill set that your a family business is pursuing, या उसके अंदर आपने कुछ हटके काम करना है? तो एक बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर के अंदर जो फर्क है, पहले उसको समझने की कोशिश करें। यू नीड टू कम अप विद समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। Recently, जो सवाल है, coming to that specifically, I wasn't well aware actually, because हम class में गए, I'm teaching from 8 in the morning to 9 in the evening, and since 2 years I've been seeing that my students in particular, which I teach around 500 to 600 students every year which go through me, they are now much more inclined toward entrepreneurship. अब वो क्या है? Amazon का काम है, हम सब सामने बैठे हैं, हमारे साथ टेलीमार्ट वाले हैं। I mean, these things were never part of our system. मुझसे बच्चे आके क्रिप्टो पे बात कर रहे हैं, सर हमें उसकी माइनिंग करनी है। These things, people are now
thinking out of the box to come up with something very original. They are, and this wasn't there when I was a student. मैं कोई 1902 के में पैदा नहीं हुआ था. I'm about hardly 35 right now. So when I did, it wasn't like we were only very conventional. एक वो कूलों की बैल की तरह ना हम बस सीधा straight काम करना है 9 to 5 and that was about it. But now students are, as Hamza said, willing to take that risk. They are willing to experiment. They have vision. They are risk takers, and they know that it will pay off because they have amazing examples, चाहे वो internationally Elon Musk की हो या हमारे साथ बैठे हुए हमजा की हो, they know that it can work provided you are following the right path. So they are doing it. They do have the skill set. I am very enthralled right now. एक जो skill set की बात कर रहे थे communication की, I believe मेरा domain है तो I believe that students and youth right now are very very good in communication right now as compared to their ancestors. 5 साल पहले जो कोई बच्चे जो था वो इतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं था जितना अब वो है. YouTube is helping to learn soft skills. जरूरी नहीं है कि वो आप expensive courses करके ही करें. Free courses हमारे मौजूद हैं. मेरे पास कल एक लड़का शाम में आया हुआ था, वो नो फ्लाई के नाम से KNOW प्रोजेक्ट समर प्रोग्राम रन कर रहा है. He is hardly an A-level student. He has got 100 students right now. Online teaching में also मौजूद है. And he's charging 5,000 rupees. And I was surprised that I've been teaching for so long, मेरे दिमाग में कभी idea क्यों नहीं आया, because I was never a risk taker. These children do have it in themselves, and we as educators, we as senior entrepreneurs, people like Hamza need to come up and take the initiative to to let them know that it's workable. वो risk factor इन लड़कों में बच्चों में मौजूद है जो हम में नहीं था. इनके पास वो विजन है, इनके पास वो that they have this ability which I can see. They have this street smartness जिसे मैं बोलता हूँ ना, ये होशियार बच्चे, they're very clever. They're not intelligent, I won't say. They're street smart, and at times for an entrepreneur to have that street smartness is more important to being rather than being an intellect. So I personally believe that it's very workable, and students do have the skill set right now. It's just that they need to know how to move on towards the right path. And I hope that Valeem is doing this project, and this might entice a few students to have in contact with senior entrepreneurs that we have in a panel right now, who actually can make a difference for these students. Yes, exactly. I agree to the point. And what I personally feel here is that just because of the advent and this changing world of the digitalization, it also has impact on this particular thing, that the students are coming forward and taking risk, as you have already mentioned, Sir Zahid. So my next question is to Ms. Saman. And ma'am, I would like to know that can you give us a comparison of how a students' attitude towards life is changing, both in good and bad ways? And if we talk about the habits of teenagers that were there in the early 2000s, and what is it now? As of course, you work closely with the students, so you have a better idea regarding this. So what do you think are the good things there that today's kids can pick from the older times? All right. Assalamu alaikum, everyone. Hope everyone is doing well. First of all, thank you, Valeem, for giving me this platform to convey my thoughts to these young entrepreneur leaderships. Basically, if you ask me for this comparison, I am a typical teacher, and I'll give my analysis from that perspective only. Yes, I like that definition of entrepreneur from Mr. Hamza. He is someone who thinks out of the box, or critical thinking. What I observe, I do not agree with this point. Now students are more critical thinker, and they are like as Mr. Zahid Anwar said, they होशियार बच्चा है. You know what I feel? कि वो जो entrepreneur होता है ना, उसके अंदर वो एक different trait होता है. वो होता है जो हम सबने वो पढ़ा होगा, Maslow's hierarchy of needs. The banda who reaches to that level of self-actualization
or at least to self-esteem after they come out of that social needs scenario, then they think out of the box and then they do something for society, for the community. I'm sorry, I said कि I will talk about from the teacher's perspective. तो वो जो सोचता है सोसाइटी के लिए, जो सोचता है कम्युनिटी के लिए, जो even if the student is thinking for bringing some good to their parent, तो आई बिलीव कि वो भी एक डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, और वहां पे भी उसको जो उसका रिवॉर्ड होता है वो एक वही एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होता है. Anyways, when you are asking me to compare these two people from earlier 2000 or maybe earlier students और आज का बच्चा, तो अच्छी बात ये है जैसे कि सर जाहिद ने ये बात बोली कि आज का बच्चा करेजियस है, गलत बात पे खड़ा होता है, बोलता है. हम in the age where we were raised, we used to be quiet in the name of respect. तो अब का बच्चा जो है वो गलत बात पे खड़ा होता है, बात करता है, सही बात को इंडोर्स करता है और करवाता है. Then secondly, what I feel कि they are more emotionally stable people. एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी. अर्लियर इफ यू जस्ट रिलेट के पहले क्या होता था कि इफ वी आर इनवाइटेड टू सम पार्टी और सम इवेंट एंड वी आर नॉट गिवन एन इनविटेशन कार्ड, तो इट वाज very emotionally disturbing point to us that they are not sent the invitation card, or we are told on telephone, or we are just sent a message through somebody. Now you think आपका बच्चा बल्कि इस बात पे आपको समझाएगा खड़े होके तो क्या हुआ, एवरीवन हैज देयर कमिटमेंट्स, एवरीवन हैज देयर ओन schedules. अगर वो तो क्या हुआ, वी हैव सोशल मीडिया, अगर हमें व्हाट्सएप पे कार्ड आ जाता है, व्हाट्सएप पे इनविटेशन आ जाए, सो दे आर मोर इमोशनली स्टेबल, सो दे आर they think this way. यानी कि ये चेंज एक अच्छा है, which is positive. थोड़ी सी जो आपने कहा कि इसको इस बैड वे में कंपेयर करें, तो बैड वेज तो नहीं होते, बिकॉज इन दिस एज इतनी मॉडिफिकेशंस आ गई हैं कि फॉर एवरी ट्रेड, फॉर एवरी कैरेक्टरिस्टिक वी हैव जस्टिफिकेशंस. लेकिन अगर मैं कहूँ कि एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट और वो चीजें जो मैं समझती हूँ कि आज का बच्चा अगर उनको अडॉप्ट करे, जो कमी मुझे फील होती है वो है कि थोड़ा स्ट्रगल का जो फैक्टर है ना वो कम है. वो जो एक कोशिश होती थी, वो जो एक मुस्तकिल करने की जुस्तजू जिसे कहते हैं होती थी, वो कम है आज के बच्चे. इफ यू गिव देम सम टास्क, छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप उनको कुछ सर्च करने के लिए दे देंगे, 4 वेबसाइट्स पे जाएंगे, नहीं मिलेगा, दे विल गिव अप. जो थोड़ा अगर पीछे चले जाएं, इवन इफ यू टॉक अबाउट आफ्टर 2000, 2003, 4 एंड इवन टिल 2012, 13 तक के स्टूडेंट्स जो मैं देखती हूँ अपनी लाइफ में, हम जब उन्हें कुछ टास्क देते थे ना, तो दे यूज्ड टू फाइंड देयर आउटकम्स एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स बाय हुक और बाय क्रुक. चाहे वो बुक से सर्च करेंगे, चाहे वो इंटरनेट से सर्च करेंगे. 2012-13 का टाइम भी तो इतना ओल्ड टाइम नहीं है. वी हैड इंटरनेट एंड वी हैड दीस फैसिलिटीज. तो उनमें ये एक चीज थी जो अब आजकल स्पेशली आफ्टर कोविड जो मुझे नजर आता है चेंज, वो है कि ईज पसंद हो गए हैं. बहुत आसानियां चाहिए हमें लाइफ में, हमारे बच्चे को बहुत आसानी चाहिए. फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गई हैं, बहुत ज्यादा लाइफ सोशल जरूर हुई है, लेकिन स्क्रीन की हद तक. सो दीज आर माय पॉइंट ऑफ व्यू. थैंक यू. Yes, Ms. Saman, as you have rightly mentioned that of course a few flaws as well. और बिल्कुल ऐसा होता है कि बच्चे आजकल socially बहुत active हैं, लेकिन when it comes to meeting to the family, तो वो थोड़ा सा exchange होता है, and of course changes are there in all time. So next I would like to know from Sir Hamza that what do you think are the unique set of challenges that an entrepreneur actually faces. आप of course काफी young entrepreneur हैं, so आपने भी कुछ challenges face किए होंगे, so kindly share with us. देखिए, चैलेंजेस तो एक ऐसी चीज है कि उसके लिए एंटरप्रेन्योर होना जरूरी नहीं है. वो तो हर इंसान की जिंदगी में, चाहे आप कहीं मुलाजमत कर रहे हैं, चाहे आप छोटी उम्र में हैं, चाहे बड़ी उम्र के हैं, तो चैलेंजेस तो पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, वही लाइफ का मेन जो मजा है वो है ही चैलेंजेस में. क्योंकि अगर हर चीज, लोग कहते हैं ना कि अगर जीत का मजा तब है जब आप हारे हो पहले,
और तो ही आपको जीत की खुशी महसूस होती है जब आपको पता है कि यार फेलियर किस तरह का लगता है। तो सिमिलरली अगर आपको जिंदगी में हर चीज स्मूथ मिले और हर चीज इजीली मिले, कंफर्ट जोन में मिले, तो फिर आपको जो है वो मजा नहीं आता है जिंदगी का, और आपको लगता है कि आप अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, आपको जो पोटेंशियल है बहुत ज्यादा है। और चैलेंजेस में ही, और बहुत इस तरह की मिसालें हम सुनते भी हैं, तो चैलेंजेस में निकलने के बाद ही जो इंसान है वो फिर अपनी वर्थ को पहचानता है, अपने ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज करता है। अब एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं एस्पेक्ट के अंदर, कि वहां पे थोड़े से चैलेंजेस शायद ज्यादा होंगे, और बिल्कुल होते हैं, और वो स्टार्ट के साथ ऐसा नहीं कि स्टार्ट में आएंगे और एक लेवल के बाद फिर आपके चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे। तो ये चैलेंजेस आपके साथ जुड़ते रहते हैं और चलते रहते हैं, और उनकी आप फ्रीक्वेंसी तय नहीं कर सकते कि स्टार्ट में ज्यादा होंगे, आप जब सक्सेसफुल हो जाएंगे तो कम हो जाएंगे। तो आप अभी अगर फॉर एग्जाम्पल देखें, जो सबसे सक्सेसफुल कंपनीज हम काउंट करते हैं, चाहे वो इलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी हो, चाहे वो अलीबाबा जो चाइना के वो है जैक माउंट की कंपनीज हो, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज का पिछले एक साल के अंदर ऑलमोस्ट $150 ट्रिलियन वाइप आउट हो गया स्टॉक वैल्यू के अंदर। इन सब कंपनीज की वैल्यूएशंस गिर गई। तो आप सोचें इनके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, जबकि ये तो हमारे नजदीक सबसे सक्सेसफुल कंपनीज हैं, जो कि अपने सक्सेस के पिनिकल पे पहुंची हुई हैं। सिमिलरली नेटफ्लिक्स ने पहली बार अपने हिस्ट्री में पोस्ट किया कि हमारा सब्सक्राइबर काउंट गिर रहा है, नेटफ्लिक्स का सब्सक्राइबर काउंट गिर रहा है, जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं। तो चैलेंजेस का मतलब बताने का इन एग्जाम्पल्स यही है कि वो आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। अब इसमें मेन आपकी टेस्ट कहाँ होते हैं, आप लोग वहां होते हैं कि आप उनको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, और आप किस तरह से रैशनली, आप कितने ज्यादा जो है वो स्पॉन्टेनियस हैं, कितने ज्यादा आप यू कैन थिंक ऑन योर टोज, हाउ अडॉप्ट टू डिफरेंट सिचुएशंस, हाउ फ्लेक्सिबल यू आर एज अ पर्सन, वो डिफाइन करती हैं आपके ट्रू पोटेंशियल को। अब आज के दौर में जो चैलेंजेस, मैं भी बहुत ज्यादा पुराना नहीं हूँ, आई एम 28 ईयर्स ओल्ड, लेकिन जब मैंने भी स्टार्ट किया 2012 में 13 में, तो उस वक्त जो एक चीज मिसिंग थी, जो अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छी है, जो आज के एंटरप्रेन्योर्स को, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को अवेलेबल है, वो है मेंटोरशिप। तो मेरे जमाने में जब मैं ई कॉमर्स स्टार्ट कर रहा था, तो मेरे पास कोई रेफरेंस पॉइंट पाकिस्तान में नहीं था, कोई मेरे पास ऐसा एंटरप्रेन्योर नहीं था जो मुझे जो है वो कहते हैं ना अपनी दरसगाह में ले, या मुझे समझाए कि भाई इस तरह से करना, ये चैलेंजेस आते हैं, हमजा तुम अभी नया नया कर रहे हो काम, इस चीज का ख्याल रखना। तो मैंने जितने भी सबक सीखे वो गिर कर सीखे, वो जो है वो नुकसान करके सीखा। लेकिन आज अगर मेरे पास इतने लोग आते हैं कि हमें ई कॉमर्स स्टार्ट करना है, फेसबुक पेज चलाना है, तो मैंने जो 8 सालों में नुकसान करके ठोकरे खा के सीखा, मैं पहले दिन उनको बता देता हूँ कि देखो वेबसाइट जब बनवाओ तो ऐसे 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 करना, कोरियर के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट करो तो कोरियर से कॉन्ट्रैक्ट में ये चीजें लिखवाना जरूर, मार्केटिंग के अंदर करो तो ऐसे ऐसे मार्केटिंग करना, यहाँ पे ऐसे नुकसान हो सकता है। तो आज के दौर में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको मेंटोरशिप बड़ी आसानी से मिल सकती है अपने सराउंडिंग्स में, अपने सिटी के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर, जिनसे वो उन चीजों को समझ सकते हैं जो चैलेंजेस बाकी लोगों ने नुकसान करके जो चीजें सीखी उनको पहले दिन समझ आती है। दूसरा, आज के एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक और जो चैलेंजेस हैं, जो थोड़े हद तक मिनिमाइज होते हैं, खत्म तो कभी नहीं होते, वो आपने देखा होगा आजकल एक बड़ा कल्चर है इंक्यूबेशन सेंटर्स का। कि इंक्यूबेशन सेंटर वो इदारे होते हैं जो छोटे मोटे स्टार्टअप्स को, जो नया नया स्टार्ट कर रहे हैं, उनको हेल्प करते हैं ग्रो करने में, उनको ग्रूम करते हैं, उनको इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से मिलाते हैं, उनको गुरुज से मिलाते हैं, उनको एडवाइस दिलाते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग्स करवाते हैं, और उनके लिए कारोबार को स्केल करना आसान बनाते हैं। तो आज से 10 साल पहले ये चीज नहीं थी, आज ये मौजूद है। उससे बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स और एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स का रिस्क जो है वो मिटिगेट होता है, और उनको एक एडवाइस, एक शोल्डर टू क्राई ऑन, या एक शोल्डर टू लीन ऑन उनको मिलता है, या एक एडवाइस का प्लेटफॉर्म मिलता है कि कहीं वो फंस भी रहे होते हैं तो वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट से, अपने कनेक्शन से, लिंक्डइन के थ्रू, इन इंक्यूबेशन सेंटर्स के थ्रू, और सबसे बड़ी बात जो मैम समन ने भी कही कि वीडियो फॉर्मेट्स, यूट्यूब और इतनी सारी चीजें उनके पास अवेलेबल है, इतना एक्सेस में वो सारी चीजें हैं कि दुनिया वाकई में ग्लोबल विलेज बन चुका है। लोग पाकिस्तान से बैठ के अमेजोन में चीजें बेच रहे हैं, वो ना, वो अमेजोन पाकिस्तान में ऑफिशियली है भी नहीं, लेकिन वो अमेजोन में यूएसए के वेयर हाउस में प्रोडक्ट रख के उसी कस्टमर को पहुंचा रहे। तो दुनिया में आज जो है वो कुछ भी चीज को सीखना, उसके ऊपर ओपिनियन लेना बड़ा आसान हो गया है। तो इसलिए चैलेंजेस हैं, हर तरह के चैलेंजेस हैं, और उसमें सबसे बड़ा चैलेंज है डिपेंडेंसी, कि आप हर चीज खुद नहीं कर सकते। ये सलमान खान की मूवी नहीं है कि वन मैन आर्मी आप है और आप सब कुछ खुद कर सकते हैं। तो जहां पे आपको लोगों पे, इदारों पे, स्टेक होल्डर्स पे डिपेंड करना पड़ता है ना, सबसे बड़ा चैलेंज ही होता है कि यार मैं टीम से काम कैसे करवाऊं,
मैं कोरियर लॉजिस्टिक्स कंपनी से कैसे काम करवाऊं, मैं सेलर जो प्रोडक्ट मेरे प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हैं उसके दीन ईमान को मैं कैसे रिस्टोर करूं कि वो 2 नंबर चीज ना भेजे, वो कोई 2 नंबर हरकत ना करे, मैं आईटी के जो मेरे पार्टनर्स हैं उनको कैसे सिक्योर करूं। तो डिपेंडेंसी अपने साथ हमेशा बहुत सारे चैलेंजेस लेके आती है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, जब आप अकेले हर काम नहीं कर सकते और आपको डिफरेंट पार्टनर्स की, डिफरेंट टीम मेंबर्स की, डिफरेंट एम्प्लॉइज की, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की जरूरत पड़ती है। तो उससे आपको जो है वो अपने बिजनेस को देखते हुए, अपने एनवायरनमेंट को देखते हुए रिएक्ट करना होता है और सीखना होता है। वही बात कि एज लॉन्ग एज यू आर लर्निंग इट्स नॉट अ फेलियर। अगर आप सीख रहे हैं कुछ तो आप फेल नहीं कर रहे हैं, आपके एक्सपीरियंसेस में ऐड हो रही है वो चीज और आगे आपको इंशाल्लाह कहीं ना कहीं वो बेनिफिट करेगी। तो दैट्स माय टेक एंड माय 2 cents ऑन द क्वेश्चन यू आस्क्ड। थैंक यू। Thank you so much, sir, for sharing the detailed review of the market and the conditions there. Uh, because of course, that's surely a motivation for the young entrepreneurs. Zahir, of course, they all feel like कि भाई difficulties हैं, but they should know that there are difficulties at the higher level as well. So heading towards our next question, and it's with Ms. Misbah. So how is IBA helping in building entrepreneurs for the future, who can solve real world problems and help our economy grow? So can you please tell us about any specific programs that are there that the teenager can look forward to? Yes, Ms. Biswa. All right, am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Firstly, to Assalamu alaikum. I've been quiet for a while and I've been listening to all of you. So, बहुत interesting answers. सबने जो बातें कही वो कह सकते हैं कि दिल की आवाज थी. Because actually challenges being in so with women and with kids and things. So थोड़ा सा मैं बता दूं कि I work at IBA CED department, which is Center for Entrepreneurship Development, and here we also have a incubation center. जैसे अभी जिक्र हो रहा था कि जो incubation centers होते हैं और वो फिर mentorship और training और सारी चीजें देते हैं, तो ये मेरा जो एक कनेक्शन रहा है वो टीनेजर्स के साथ भी रहा है और जैसे मैंने कहा कि किड्स के साथ भी रहा है, तो उसमें जो बात हो रही थी कि क्या चेंज आया प्रीवियसली, यानी 1990 से लेकर अब तक, तो बेसिकली अभी कह लो कि फुल टाइम जॉब्स होती हैं, नाउ चीजें जो है वो चेंज हो रही हैं, करियर चेंज हो रहे हैं. All right, I guess there was some internet connection with Ms. Misbah. So Okay, I'm back. Yes. Right. Yes, All right. ma'am, I can hear you perfectly now. Can you hear me, ma'am? I'm sorry about the internet. अच्छा, उनके अंदर skills, yes, can you, am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Okay, so I was just saying कि बच्चों का अगर स्किल सेट जो है वो अपग्रेड किया जाए, उनको ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज किया जाए और उनको थोड़ा बहुत बता दिया जाए कि बिजनेस मॉडल क्या होता है, आप कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज से काम कर सकते हैं,
मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप कैसे काम कर सकते हैं, और उसके बाद उनको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस और एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज से अगर गो थ्रू कर दिया जाए तो उससे उनको बहुत लेवरेज मिलता है, उनको नॉलेज अवेयरनेस मिलती है. So at IBA we have a set of programs which are designed for kids and teens. तो फॉर एग्जाम्पल समर्स में हम एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज करवाते हैं, और किड्स का अभी हमने रिसेंटली करवाया था, तो उसके अंदर भी हमने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज रखी जो फन फील्ड भी थी, जिससे बच्चों को जो है वो एंजॉयमेंट भी मिल रही थी, साथ साथ जो है उनके लिए लर्निंग भी हो रही थी. फॉर एग्जाम्पल एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के ऊपर सेशन था, तो उससे उनको मौका मिला कि वो एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से अपना स्किल सेट जो है वो उसे एक्सप्लोर करें. साइड बाय साइड हमने उनको और भी चीजें करवाई, जैसे टर्किश लैंग्वेज हो गई, फील्ड विजिट्स हो गए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग करवाई, कुछ हमारी एंटरप्रेन्योरशिप की इन हाउस एक्टिविटीज होती हैं. तो इससे ये होता है कि उनको एक चांस मिलता है एंटरप्रेन्योरियल गिग्स डेवलपमेंट का, यानी जो उनका स्किल है उससे वो एक्सप्लोर भी करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उनकी कम्युनिकेशन जो है वो एनहांस होती है, और उनको आइडिया होता है. अच्छा, उनके सामने हम ऐसी स्टोरीज भी लेके आते हैं जो रियल लाइफ स्टोरीज हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारा जो इंक्यूबेशन सेंटर है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया, उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, और नाउ दे आर एट सम पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल एम्बार्क एक इसमें से एग्जाम्पल है. इसी तरीके से बहुत सारे हमारी सक्सेस स्टोरीज भी हैं. तो उन सबको हम लेके आते हैं इनके सामने, ताकि जो है इन बच्चों का एक क्या कह सकते हैं हॉरिजॉन इंक्रीज हो, उनको थोड़ी सी नॉलेज बढ़े. सो लाइकवाइज वी हैव अ प्रोग्राम जो कि अभी हम टीन्स के लिए करवा रहे हैं. तो उसमें यही है कि 10 डेज के अंदर हम बहुत सारे ऐसे लोगों को लेके आ रहे हैं, जैसे अमेजोन सेलिंग के लिए एक सेशन रखा है, उसमें वो स्पीकर आएगा, वो बताएगा अपनी पूरी जर्नी. सिमिलरली डिजिटल मार्केटिंग हो गया, सिमिलरली वेबसाइट डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, और इस तरह से एक हमारे हैं हसन ट्रैक्स लॉजिस्टिक्स के ऊपर वर्किंग. इसी तरह से वी आल्सो इनवाइटेड अली रिहान, ताकि अली जो है वो भी अपना थोड़ा सा बताएं एक्सपोजर जो वालीम का उनका पूरा है. तो इससे ये होगा कि उन बच्चों को जो टीन एजर्स हैं उनको समझ आएगा कि उनको क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स जो है वो सिलेक्ट करने चाहिए, और किस तरह से वो अपना स्किल एनहांस कर सकते हैं विद बेसिक नॉलेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से इनको बताते हैं वो ये है कि वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ बर्ड इन हैंड. तो बर्ड इन हैंड में हम उनको ये बताते हैं कि आपके पास सब कुछ है, यानी आपके पास सारी रिसोर्सेज हैं. आप प्लानिंग पे या आप बहुत लंबा विजन 2040 2050 तक का विजन ना बनाएं, इंस्टेड आप छोटे छोटे स्टेप्स लें और उनसे आप स्टार्ट कर दें. लाइक फॉर इंस्टेंस इफ आई वांट टू स्टार्ट अ बेकिंग बिजनेस, मैं डायरेक्टली जाके एक बहुत बड़ी बेकरी नहीं खोलूंगी. इंस्टेड आई जस्ट बेक समथिंग एंड टेक इट इन माय फ्रेंड सर्कल, एंड देन उसके बाद मैं लोगों से फीडबैक लेके, कस्टमर फीडबैक लेके, एंड देन आई स्टार्ट ऑफ विद समथिंग. सो दिस इज लाइक, इसमें मुझे ज्यादा पैसे भी नहीं चाहिए, और इसमें क्या है कि मेरा अपना स्किल है बेकिंग. आई एम ऑल्सो नॉट वेटिंग फॉर द शेफ. सो यहाँ जो पूरा अच्छा, एंड आई एम यूजिंग माई नेटवर्क्स. सो बर्ड इन हैंड बेसिकली यही है कि आपने मिनिमम इन्वेस्टमेंट से काम करना है. जो आपके पास लोग अवेलेबल हैं आपने उनके साथ कनेक्ट होके, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट ऑफ. तो इस तरह से फिर हमने इसमें एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज भी रखी हैं, जिसमें उनको टीम कैसे बनानी है, कोलैबोरेशन कैसे करनी है. इसके अलावा फॉर एग्जांपल डिजिटल मीडिया हो गया, तो फेसबुक का पेज आपने कैसे बनाना है, और इसी तरीके से वी हैव स्पेसिफिक मॉड्यूल्स जो हम उसमें कवर करवाते हैं. तो अभी मैंने जो हमने जो भी करिकुलम डिजाइन किया है उसमें हमने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की भी थीम रखी है. उसमें भी बच्चों को ये सेंस देना कि योर एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आपको प्रिजर्व करना चाहिए, और आपकी जो रिसोर्सेज हैं आपको उसको कैसे एफिशिएंटली यूटिलाइज करना चाहिए. आई एम ऑल्सो प्लानिंग एक फील्ड विजिट हम ऐसी जगह कराएं जो ग्रीन इकोनॉमी से रिलेटेड हो. तो इससे ये होगा कि जो मॉडर्न गिग्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचेगी, और उनका जो यानी दिमाग बेसिकली खुलेगा, एंड इंशाल्लाह ताला उनको फिर अपना जैसे फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा एक यानी अपना करियर सिलेक्ट करने में ज्यादा इजी हो जाएगा. सो दैट्स द प्लान एट IBA, and these are the courses that we are going to conduct.
So, ma'am, quite this is Zaid Anwar. Just a question. Sorry, Ujara. Which age circle are we targeting for the summer program? Because obviously, I am dealing with this as a certain age group, so I might, be very helpful for अच्छा you. अभी kids का जो करवाया था ना, that was 7 to 12 years, but for teenagers we have 13 till 19 years. So you are And we're actually you have a program of entrepreneurship for 7 year students, 7 years old. sir, yes, we have an entrepreneurship course, ठीक है, जो सबके लिए है, और फिर उसमें बच्चों का होता है तो हम बच्चे बन जाते हैं, जब वो सीनियर लेवल का वाह होता जी है तो वाह, हम उसमें, तो क्या बात है। अभी जो टीन्स का जो आ रहा है This is ना, what I'm इट इज talking टेकिंग about. जी, प्लेस लाइक in the mid of July, 18 July से 27 July तक करवा रहे हैं हम उसको. Thank you. All right, so quite nice information from Ms. Misbah. Acha, Ms. Misbah, as you are dealing with this at the moment as well, so can you please also let us know that how effective have these programs been in the past? The ones you have just. अच्छा, we are conducting the summer entrepreneurship camps since 2014. कई करवाए हैं और कुछ हमने ऑनलाइन किया. मजा आया शुरू में, भी लाइक होगा तो उसमें हमने काफी सारी इंटरनेशनल फैकल्टी को भी एंगेज किया. फॉर इंस्टेंस प्रोफेसर हांस हमारे पास आते थे और वो थाईलैंड से ज्वाइन किया उन्होंने. इस तरह से भी हैड डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स, और हमने खुद से बहुत सारी एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज. फॉर इंस्टेंस एक छोटी सी बात बताती हूँ, बीम की वीडियो हमने चलाई थी, और जो है वीडियो थी जिसका लेसन पिज्जा जाके खरीदता है और फिर वो उसे सेल करता है. तो ऑनलाइन में भी अल्हम्दुलिल्लाह वी हैड अ वेरी गुड, यानी बहुत अच्छे प्रोग्राम्स रहे. मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे हमारे पास 84 तक गए, जो मिनिमम गए दैट वाज 60. सो वी हैड दिस प्रोग्राम फॉर किड्स एंड टीन्स ड्यूरिंग कोविड एज वेल. और अब जो हमने फिजिकल करवाया बिल्कुल रिसेंटली, तो वो बहुत मजे का था. लाइक फॉर इंस्टेंस उसमें हमने एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज ऐसे रखी कि हम वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस सेंटर लेके गए बच्चों को, और उसके अलावा हमने गार्डनिंग की एक्टिविटी करवाई. इसी तरीके से टर्किश लैंग्वेज सेशंस हमने करवाए. सो वी हैव सिमिलर प्लान्स इन टीन्स, मगर टीन्स का जो है ऑब्वियसली वो थोड़ा एडवांस होगा. उसमें हम बिजनेस आइडिया प्रेजेंटेशंस भी करवाएंगे, और उसमें ये होगा कि हर बच्चे को कहा भी जाएगा कि जो उनका उसका जो बर्डन हैंड है उसकी बेसिस पे जो है वो प्रेजेंट करे और अपना एक बिजनेस आइडिया शेयर करे. तो और फिर वो आइडियाज जो है हम लास्ट डे इन फ्रंट ऑफ द पेरेंट्स जो है वो ceremony parents भी आते हैं. So alhamdulillah, feedback was good from our kids program. और यही वाली बात है जो पेरेंट्स का कहना था कि बच्चों ने जो स्कूल्स में कन्वेंशनल एक्टिविटीज होती है ना, उस सीपीए में Okay, I'm sorry, I got disconnected again. So, am I audible? Yes, okay. So I was just telling about the sports activities. तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी हमने उसमें काफी सारी रखी हैं. क्रिकेट मैच भी रखा है हमने बच्चों के लिए. सो फन फील्ड कैंप है, और साथ साथ जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप भी सीख रहे हैं. बहुत सारी चीजें हैं. फिर इसमें एक लाइफ स्किल्स का भी मॉड्यूल है जिसमें हम उनको टाइम मैनेजमेंट, स्लीप मैनेजमेंट और ऐसी चीजों पे भी थोड़ा सा
बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है। जैसे आजकल जो बच्चे हैं उनमें रिस्पेक्ट वाली बात, जैसे मैं समन कह रही थी कि बच्चे जो हैं वो इतना गलत बातों पे भी वो खड़े हो जाते हैं, तो वो मैनर्स के ऊपर भी हमने इसमें थोड़ा सा एक एस्पेक्ट रखा है और डिफरेंट फैकल्टी को एंगेज किया है जो कि इनको करवाएंगे। All right, ma'am. Thank you so much for the detailed response. Now, Ms. Saman, I would like to know if you can please share with us any examples of students who have managed work and studies along. Because of course, this is the motivation for the students who have joined us today. You must have asked me this question because with my teaching career, I must have been inspired by some of my students. Right. Yes, there are some examples, but before that, I would again like to focus on that trait. I think that is the same trait which is common in every inspirer, every person who thinks out of the box. That is that they care for the cause. So yes, I would like to share one very interesting example of my student. He was in grade 9, and it was I think 2009 or 2010. I don't remember the year exactly. The student was in grade 9, and he used to have average grades. And of course, being teachers, we were very concerned about the grades mostly. So me and my colleagues, in one of the PTMs, we asked father about him, why, although he was very intelligent and he used to produce good answers, but while it comes to exam, he was always very average kind of grade taker. So when I asked father, he said the child goes to his family shop in the evening, and in morning he comes to school. And we were surprised because the school I was teaching, they were taking good amount in the name of fee, handsome amount. So it was not understood that there could be any financial crisis for which the child was going to the family shop. And when it was probed from the parent, obviously it gives an anger to a teacher that the student is suffering, his performance is not up to the mark due to his involvement in any other activity. So we asked the parent, and the parent said it's his own willingness that he goes to the shop, and we are not compelling him to do so. And again, it was a surprise for all of us. Anyways, collecting all my courage, and after some days, I was able to ask him, and he said, Miss, actually, this is my father and grandfather's shop, and obviously we are managing well, and we are living up to the good standard to meet the standards of the society and all that. But what I aim, you see, the 9th grade student, I mean, hardly 15 years of age he was in, and he said, Miss, I see that after I come into like this profession formally, I want to see this business at least, if not in the world, I want to see this growing at least till each and every corner of Pakistan. And I want to take it to the grand level so that my father feel proud of me. So it was really, obviously, if you look at from that perspective of financial crisis, there was no need, because nowadays what students think, agar hame early age mein working start karni hai, so the reason could be that we need money. It's not that we always need money. It's something you are, as I like that Sir Hamza's point, because at early age he started his activities, so he learned all the failures as well. So he knew that how to cope, how to bring those failure to success points, and that is why he was able to guide others as well. तो देखिए ना, वही वाली बात आ गई ना कि he is not doing it for himself but for others. जो हमने खुद efforts करके सीख लिया, जो चीज हमने सीख ली, now we are giving that same thing to others with the will कि हम कुछ सिखा दें, not with कि हम the point is not always earning money.
ठीक है ना, तो कुछ सर्व करने के लिए, कुछ किसी की खातिर कुछ करने के लिए. एनीवेज तो आई थिंक अराउंड 10 years after that, क्योंकि social media is very active, so I know about that. In Karachi, at least, they have all the same student is having shops in overall Karachi, and everyone knows that bookshop, very common, and most of the schools are taking their stationeries and books from that bookshop. So it was one of the very inspiring story. और जो मुझे लगता है जो हमें बच्चों को गाइड करना चाहिए, जैसे कि मिसबा is already working on it, कि हम अगर उन्हें अर्ली एज में ये चीज बता देना कि अगर हम अर्ली एज में जो हम काम के साथ स्टडीज करते हैं, दैट इज नॉट टू ऑलवेज अर्न मनी बट टू अर्न सम स्किल, बट टू अर्न हार्डशिप्स, बट टू नो हाउ टू कोप अप विद फेलियर्स एंड to turn those failures into success. So I think that could help a lot. Thank you. Right. I'm quite an inspiring example and of course a role model for the people who have joined us today in this session. So now I would like Sir Zahid Anwar, can you please help us in concluding our today's session for the audience? Yeah, well, okay. So I guess we have got two senior entrepreneurs before us. लेकिन अगर आप मुझे वो अगर इसको ज़्यादा अच्छा conclude करते हैं, but what I would say is that we have examples, people over all of you I'm talking about. We have examples within the last few years. We have examples among you, among you all, who people who have done it. So the first thing is वो नियत करें आप, उसके बाद अल्लाह खुद रास्ते पैदा करेंगे. Have that vision first. वो आप the first step जो है ना, and it's always baby steps. You need to take some small baby steps towards it, and हो जाएगा, होता है. I have got 3 examples before me. मैं US consulate के साथ काम करके IN का प्रोग्राम था. हम लोग अंडर डेवलप्ड एरियाज के अंदर जाके पढ़ाते थे. अंडर मोड़ नागन चुरंगी पे एक स्कूल था, पब्लिक स्कूल कॉलेज, वहां जाके आफ्टर स्कूल प्रोग्राम था जहाँ मैं आई वाज टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, वर्किंग विद द US काउंसलर. वहां का लड़का निकल के सनी अली के साथ वो एसोसिएट हुआ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर ओवर देयर, और राइट नाउ वो अपनी मीडिया मार्केटिंग की चला रहा है. कल मेरे पास रात में आया था, बैठा हुआ था, अर्निंग अराउंड 1.5 to 2 lakh rupees a month, a person who used to come in 2 पट्टी की चप्पल पढ़ने के लिए. मेरे सामने की एग्जाम. एक स्टूडेंट मेरा और है, एक नॉर्थ आजाबाद के बड़े लीडिंग कॉलेज के अंदर वो है. he initiated the idea of e-learning society. अब वो e-learning वो नहीं था कि कुछ डिग्रीज, और वो पूरी दुनिया से की टॉप यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता था, उठाते थे वहां से वो कोर्सेज, फाइनेंशियल असिस्टेंस पर I guess there is some internet problem with Sir Zahid Anwar. I hope कि उन्होंने काफी अच्छा conclude किया है, and it was quite a knowledgeable session for everyone who has joined us today. Now we would like to have a few question and answers from the audience. So yes, please, if you people have any question, then go ahead. I have seen some question in the chat box as well. Yes, I am going back to that, and I'm telling you. So there was a question by Mr. Shanawar Abbas that, sir, if we get these problems and unless we don't fall, how do we get efficient enough? Advice is wise, but isn't
falling and getting up better again. So yes, Sir Hamza, what you would say in response to this? सॉरी, मैंने आपका सवाल मिस कर दिया। आप चैट के सवाल की बात करेंगे, चैट पे आया हुआ सवाल। Yes, that it was, sir, if we get some problems and unless we don't fall, how do we get efficient enough? Advice is wide, but isn't falling and getting up better again. देखिए, इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो यूनिवर्सल मशवरे होते हैं। मिसाल के तौर पे आग जल रही है सामने और कोई आपको कहे कि इस आग में आपने हाथ नहीं डालना, इससे हाथ जल जाता है, तो आप ये कहें कि नहीं, मैं आग में हाथ डालूंगा, मेरा हाथ जलेगा एक बार, तो मुझे जो है वो सीखने का मजा आएगा। तो इसलिए कुछ यूनिवर्सल एडवाइस होती है कि देखें, मैं इस रोड से गुजरा हूँ, मुझे पता है इस रोड पे आगे जाके 3 खड्डे आएंगे, आपने लेफ्ट ले लेना है। तो उसमें आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं यार, मैं आपके मशवरा नहीं, मैं आगे जाके इन खड्डों में गिरूंगा और फिर मैं गिर कर सीखूंगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर हर बंदे की एडवाइस आपके एग्जैक्ट कंपनी पे, आपके एग्जैक्ट सिनेरियो पे नहीं बैठती। तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं अपने गट पे रिलाई करना पड़ता है, अपने सिक्स्थ सेंस के ऊपर रिलाई करना पड़ता है और अपने डिसीजन पावर के ऊपर रिलाई करना पड़ता है। लेकिन जहां पे जो इंसान उसी तरह की जर्नी से, उसी तरह के प्रॉब्लम से, इशू से और एक्सपीरियंस से गुजर कर उसी के हवाले से आपको जब मशवरा दे रहा है, तो इट्स एन एफिशिएंट वे, इट्स अ फास्टर वे ऑफ लर्निंग थिंग्स, एंड दैट इज हाउ यू एक्चुअली लर्न। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप बजाय इसके कि खुद फॉल हो, उसकी वजह देखें क्या होती है। एक और अगर इसमें बताऊं थोड़ा सा, कि जो पहला बिजनेस होता है ना किसी भी एंटरप्रेन्योर का, वो सबसे क्रूशियल होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें आपको सबसे ज्यादा कन्विक्शन, पैशन, सब चीजें आपकी स्ट्रीमलाइन होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग हैं, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनका अगर पहला बिजनेस फेल हो जाए तो वो दूसरा बिजनेस स्टार्ट करें। तो इसलिए इफ यू फेल अर्ली इन योर फर्स्ट स्टार्टअप, इन योर फर्स्ट कंपनी, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बुरी तरह से शैटर होता है और फिर आप दूसरी बार एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं जाते और आप जो है वो किसी और एम्प्लॉयमेंट को आप प्रेफर करते हैं। तो इसीलिए वहां पर एडवाइस लेना, अपनी प्रेपरेशन को कंप्लीट रखना, और जहां जहां आपको देखें, हमारा दीन इस्लाम भी कहता है कि मशवरे में बरकत है। तो वो किसी वजह से कहा जाता है कि मशवरा जब आप करते हैं किसी से भी, हाँ ऑब्वियसली देखें, आप दीन का मशवरा करने जाएं और आप किसी दीन का मशवरा किसी सिंगर से ले रहे हो, या आप गायकी का मशवरा करने जा रहे हैं और आप किसी जो है वो दीनी इंसान से उसका मशवरा ले रहे हैं, तो आप किससे मशवरा ले रहे हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी सही इंसान से मशवरा ले रहे हैं तो आपको दोनों हाथों से वो मशवरा लेना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी गलत इंसान से मशवरा ले रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है उस मसले की वो वर्थ या क्रेडिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। इसलिए मैं प्रेफर ये करूंगा कि आप अगर किसी से मशवरा ले रहे हैं और आप अपने किसी फेलियर को उससे बचा सकते हैं तो आप बिल्कुल करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी खुद ठोकरें खा के नहीं सीखेंगे, आप बिल्कुल सीखेंगे, उसके बाद भी आप ठोकरें खाएंगे, लेकिन वो ठोकरें कम हो जाएंगी और वो ऐसी ठोकरें होंगी या वो ऐसे लेसन होंगे जिनको आप बर्दाश्त कर सकेंगे, और आप कॉन्फिडेंस, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो शैटर नहीं होगा, आपका जो मोरल है वो टूटेगा नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है। Right. Okay. So we have one more question here as well, and it's by Ms. Zanera, who is asking that if we want to start up something, what are the better options for getting investment and how to market it properly to guarantee success? ये बहुत जेनेरिक सवाल है, बहुत ज्यादा जेनेरिक सवाल है कि इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होगी और कहाँ से चाहिए होगी इन्वेस्टमेंट। देखिए, आइडियली तो अगर आप अपने आइडिया में इतना, आपकी कन्विक्शन नहीं है, आपका बिलीफ नहीं है और आप इतने पैशनेट नहीं है कि अपने पैसे लगा सकें, तो फिर तो कोई और आपको पैसे क्यों देगा, पहली चीज। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट एक्सटर्नली मिलना आइडिया स्टेज पे बहुत मुश्किल होता है कि आपके पास एक आइडिया है पेपर के ऊपर कि मुझे ये करना है, और आप किसी इन्वेस्टर के पास जाएं या अपने फैमिली में किसी के पास जाएं और कहें कि मुझे आप पैसे दे दें इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उनके पास आपके ऊपर पैसे लगाने के लिए कोई कॉन्क्रीट चीज होनी चाहिए है, जिसमें एक चीज तब आती है इन्वेस्टमेंट आपके लिए आसान होती है जब आप 2-3 कंपनीज बना चुके हैं और आप चौथी कंपनी के लिए जा रहे हैं और आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, आपकी क्रेडिबिलिटी है, तो उसमें फिर वो पैसे जो लगाएंगे वो आपके आइडिया से ज्यादा आपकी क्रेडिबिलिटी और आपके ट्रैक रिकॉर्ड पे लगाएंगे। लेकिन जब आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इतना आसानी से आपको इन्वेस्टर्स या पैसे फौरन नहीं मिलते। इसीलिए जो बातें जितने भी लोगों ने यहाँ पर की, मैम समन ने की, मैम मिसबा ने की, कि स्टार्ट स्मॉल, बर्ड इन हैंड थ्योरी है कि आप जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है आप उससे स्टार्ट करके देखें और उससे अपने मॉडल को टेस्ट करें। जब आपके मॉडल टेस्ट होता है, आपने अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में और सोशल सर्कल में उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को बेचा, उस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला, अच्छा वर्ड ऑफ माउथ मिला, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसको स्केल करें, थोड़ा थोड़ा करके उस कारोबार को बढ़ाएं, और फिर जब उस कारोबार के अंदर अच्छी ट्रैक्शन बिल्ड होती है फिर आप किसी इन्वेस्टर के पास जाते हैं
तो आपके पास आसानी होती है कि अगर आपने अब ग्रो करना है, जिसको ग्रोथ कैपिटल कहा जाता है, कि अब आपने तेजी से ग्रो करना है, आपने अपने मॉडल की टेस्टिंग कर ली कि मॉडल अच्छा चल रहा है, कस्टमर्स की तरफ से पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ है और कस्टमर्स आ भी रहे हैं, रिपीट रेशो भी कस्टमर्स का ज्यादा है, रिटेंशन भी ज्यादा है, तो फिर आप उसको स्केल करने के लिए ग्रोथ कैपिटल की तरफ जा सकते हैं. बट इट्स ऑलवेज गुड टू स्टार्ट विद योर ओन रिसोर्सेज ऑन अ वेरी स्मॉल लेवल एंड टेस्ट द वाटर्स. वंस योर बिलीफ इज, मतलब वो आपका बिलीफ जो है वैलिडेट होता है मार्केट से, कस्टमर से रिस्पॉन्ड अच्छा आता है, रिस्पॉन्स अच्छा आता है, फिर आप जो उसके बाद इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं. अगर आपके लिए ग्रोथ बहुत ज्यादा तेजी से करना इंपॉर्टेंट है तो फिर आप ग्रोथ कैपिटल ले सकते हैं. Right. So I guess all the questions are now answered. That was quite a remarkable session, and we are really thankful to Ms. Saman, Ms. Misbah, Sir Zahid, Sir Hamza for joining us today and shedding light upon this topic, that is youth and entrepreneurship. And I hope this is fruitful for all the people who have joined us today. Thank you so much, everyone. Jazakallah. Allah Hafiz. You're welcome. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Love is. Badi nawaz ji. Thank you, ji. Allah Hafiz.